Why does my back hurt? Recently someone asked me कि मेरा बैक पेन क्यों हो रहा है. Is it because मैं टेढ़ा बैठता हूँ इसीलिए? So let's understand why does our back hurt. And back pain, low back pain or back pain in general can cause because of many things. So let's understand few reasons behind it. So number one is improper posture. So अगर आपने देखा होगा, many people have a habit of actually sitting like this. Like I generally call अमिताभ बच्चन जैसे क्यों बैठे हो, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे. और recent if we can talk like Pushpa, right? So this is one of the example of an improper posture, जिसकी वजह से क्या होता है कि some muscles get tight and the opposite group of muscles are lengthened, so there is no balance between the two group of muscles and resulting back pain. Number two is long hours of anything, long hours of sitting, standing, walking, bending. Okay, so if you are sitting say 8 hours continuously, 8 hours a day, so definitely it will hurt your back. Why? I'll tell you. So sitting causes compressive forces on the spine. Sitting में सबसे ज्यादा compression आता है on the spine and the disc. So the people who are sitting for a long time are definitely prone to getting low back pain at least once in their lifetime. ठीक है, अगर वो sustained रहा, like people who work say for 15 years, 20 years of their lifespan in sitting will definitely have some or the other back issues अगर उन्होंने properly care नहीं किया तो. Number two is why standing. So yes, standing will also have some kind of compressive forces on the spine, definitely lesser than sitting, but होते हैं. And people who have to stand for a long period of time can cause low back pain. We generally call it sacroiliac joint pain. अगर वो एक साइड पे हो रहा है, दोनों साइड पे भी हो सकता है, again it depends. For bending, yes, it is जग जाहिर यूनिवर्सल. एवरीबडी इज अवेयर कि बेंडिंग ज्यादा करने से बैक पेन होगा ही. इवन फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग इज कॉज्ड इन द मतलब इज रिक्वायर्ड इन द पीपल हु आर पेंटर्स. लाइक सीलिंग जो पेंट करते हैं उनको बहुत टाइम तक बैकवर्ड बेंड करके रखना पड़ता है, विच ऑल्सो कॉजेज प्रेशर ऑन योर स्पाइन. एंड forward bending जो who have to bend a lot and do activities like lifting from this इधर से उधर करना या कुछ segregate करना, like our सफाई कर्मचारी also have to do a lot of segregations of our waste. So ये सब की वजह से, और gardener who has to bend down a lot, a farmer can cause are basically more prone to low back pain. उनको होगा ही ऐसा नहीं है, पर उनके होने के chances than the normal person is more. Number three is long hour of traveling. So आजकल क्या हो गया, after COVID people are used to मतलब बाहर जाके काम करना मतलब oh my god, work from home is now the new normal to everybody. So when they step out of the house and they have to travel a lot, like say 1 hour, 1.5 hour, 2 hours for one time, उतना ही वापस भी आना है घर पे. So they either choose to travel by car or bus, train or bike. So analyzing the condition of our roads, definitely because of the bumps, because of the twists and turns and the traffic, and of course long hours of sitting in that position can cause you back pain. Number 4 is sudden jerk or trauma मतलब अगर डायरेक्टली आप गिर गए हो, किसी ने आपको कुछ मारा हो या कुछ एक्सीडेंट हुआ है, विच इज अ डायरेक्ट ट्रॉमा, उसकी वजह से तो बैक पेन होगा ही, ऑब्वियस है. जर्क, लेट्स अंडरस्टैंड जर्क, क्योंकि ये बहुत बार समझ में नहीं आता है एंड वी गेट रियली स्केर्ड बिकॉज ऑफ दिस. सो जर्क मतलब मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे हो एंड यू जस्ट वेंट टू वॉशरूम एंड आपको अभी भरी हुई पानी की बाल्टी उठानी है, सो उसकी वजह से उसके लिए आप झुक के आगे एंड नाउ यू हैव टू पिक अप द bucket.
but suddenly there is some catch and then you are absolutely not able to move from the place. It is a very scary experience, बट इट इज बिकॉज ऑफ द सीवियर मसल स्पैज्म. ये जो है हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि देयर इज अ सडन मूवमेंट जो हमें नहीं पता चला क्या हुआ बॉडी को, तो उसने चूज किया कि ओके लेट्स कॉन्ट्रैक्ट सो दैट हमारी स्पाइन को कुछ ना हो. सो दैट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. जैसे हम गिर जाते तो हम हमारा सिर संभालते हैं, सिमिलरली बॉडी ऑल्सो हैज इट्स ओन मैकेनिज्म. सो दैट इज कॉल्ड कैच, और हिंदी में हम बोलेंगे लचक, समथिंग लाइक दैट. एंड द फिफ्थ वन इज फ्रैक्चर. फ्रैक्चर हुआ तो फ्रैक्चर एंड टीबी. फ्रैक्चर हुआ तो डेफिनेटली पता ही है यार, दर्द तो होगा ही. टीबी, वाई द रीजन मेंशनिंग टीबी हियर इज ऑफकोर्स इट इज अ रेयर cause then compared to all the other causes which we have mentioned prior, but it is still a cause and it generally goes unnoticed. So this is also one of the reason. So I hope by this you could understand little bit of your back pain, and don't worry, all these things are manageable. ऐसा नहीं है कि एक बार बैक पेन शुरू हुआ मतलब हो गया, my life is done now, I will not be able to do. No, it's not like that. We can definitely take precise care of your back, and you just need few of the correcting techniques in your life, and just be consistent with it. So hope you are following us to know more about the treatment aspect of low back pain or back pain in general. We will be putting different videos, different reels, different shorts on our social media. So do follow at the rate Precise Care Physio on Instagram and Facebook. We are also there on YouTube. So hope you have a good day.